So corruption, maladministration and abuse of power. So British Parliament, so from 1788 to 1795, there was an impeachment trial on Warren Hastings on the grounds of corruption, maladministration and abuse of power. पूरी दुनिया की गवर्नेंस जो है टैक्स पे चल रही है। मजे की चीज़ ये जो रिच क्लास है वो टैक्स ही नहीं पे करता। एंड हु इज अर्निंग हाईएस्ट इन दैट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीएसटी, क्योंकि लग्जूरियस कार है तो कौन कितना चला गया? 28% जीएसटी हो गया। तो 28% उन्होंने, लेट्स से 35 इज द एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है, तो 35 का और जोड़ लो 10-12 लाख रुपए, तो यही हो गया। अच्छा, सुबह तो बहुत तेज हो रही थी यार। सितंबर होने को आ गया, बारिश अभी तक हुई रही। सी कौन सी क्रॉप्स की? अरे भैया, क्रॉप्स कटने का टाइम आने वाला, बारिश हो गई तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहाँ हुई? हल्के फुल्का रहता है, लेकिन इतना प्रोलॉन्ग्ड मानसून इज, सी द साइकिल्स दैट आर देयर। अब क्या होगा? इसकी वजह से हार्वेस्ट डिले होगा, ठीक है। हार्वेस्ट अगर डिले होगा तो उतना कम टाइम मिलेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फीड्स फॉर द रबी क्रॉप्स, विच इज़ द मेन क्रॉप हियर बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन। द रीज़न दैट हियर रबी क्रॉप्स आर मोर इंटेंस बिकॉज द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द wheat crop, especially during the milking stage, that is 3 to 4 degrees centigrade. It generally drops in early in the morning in the winter season, like 15-20 days we have such temperature, especially in the outer regions. So what will happen if that goes delay? पराली जलेगी, क्योंकि उनको खेत पे से रिमूव कर रहे हैं। और पराली जलने के पीछे जो लॉज है ना, वो पंजाब का जो वाटर कंजर्वेशन वाला जो लॉ है, दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड। हाँ, जिसकी वजह से 20 दिन डिले हो जाते हैं। 20 दिन डिले होते हैं, दे हैव नो चॉइस बट टू बर्न द स्टबल्स इन द फील्ड ओनली। पंजाब में है कि ऑनसेट ऑफ मानसून, पहले क्या होता था, जो खरीफ क्रॉप्स की सोइंग है वो पहले कर लेते थे जून फर्स्ट वीक में, डिपेंडिंग ऑन द इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल, क्योंकि यहाँ मानसून आने में टाइम लगता है। सो what to मतलब they have, I think 15 June or 1st of July, there's some deadline to that, I don't remember exactly. 1st of July, yes. So before 1st of July sowing is not possible. ग्राउंड वाटर कम होने लगा है उनका, पंजाब का ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो 1st of July जनरली जो राइस पैडी की क्रॉप है, दैट रिक्वायर्स 100 to 122 days, 20 days डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी। किस वैरायटी का चावल है उसके बेसिस पे 100 to 120। अब जुलाई से 120 दिन लगाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अगर 1 जुलाई को हुआ है, क्रॉप हुई है, तो आप ये मान के चलो वो अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद जो है वो हार्वेस्ट होगी। और एनी हाउ इफ़ यू हैव टू अचीव मिल्किंग स्टेज इन द व्हीट क्रॉप समवेयर इन द 15 दिसंबर to 15 जनवरी वाला टाइम है, जब उसमें एक्चुअली ठंड का इम्पैक्ट पड़ता है और ठंड की ज़रूरत होती है, देन यू हैव टू सो इट अर्ली। तो उनका जो वो फील्ड प्रिपरेशन का टाइम है वो श्रिंक कर गया है। पहले पराली का प्रॉब्लम इसीलिए नहीं था इस तरफ, और कहीं होता भी नहीं है, और कहीं जलाने का प्रॉब्लम ही नहीं, इसी तरफ होता है बिकॉज ऑफ दिस नॉर्म्स। वो इसीलिए होता है क्योंकि अब उनको पास पहले क्या होता था, 1 महीना मिलता था तो ईजीली उसको डिस्पोज ऑफ कर देते थे। इतना टाइम भी होता है, क्योंकि अगर अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो उसको 1 महीना जो भी उसका वो करते थे प्रोसेस, उसका टाइम है नहीं। एंड इफ विल कीप 1 month फॉर दैट, देयर सोइंग टाइम विल बी हैम्पर्ड। और मेन क्रॉप जो वीट है, तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। These are all anthropogenic, this is not something natural। उनको क्यों शौक आ रहा है? किसी को शौक आ रहा है पराली जलाने का, लेकिन उनके पास उनका भी एक रीज़न है विच इज़ वैलिड इनफ। लाइक यू वोंट फाइंड सच थिंग्स इन साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, और इवन इस तरफ यूपी में भी ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत तो हर जगह जलती है, थोड़ी बहुत तो हर जगह जलती है, वो तो है ही। जिसने लेट वैराइटीज़ लगाई हैं, गन्ना ज़्यादा होता है ना, गन्ने की क्रॉप वैसे 18 महीने की होती है, लेकिन ये अब क्या होता है, अब वो पराली जलाने से भी प्रॉब्लम नहीं। पराली कब जल रही है?
यही पराली 15 दिन पहले जलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, हवा गर्म होती है ना तब, ऊपर चला गया, अब 15 दिन में हवा ठंडी होने लग गई। So atmospheric pressure, and when it is temperature and pressure are inversely proportional. So gradually what will happen if you burn all this in March, they used to burn in March as well, but that is not a problem in March because the air is warmer and it escapes. But what happens in winters, because the onset has started somewhere in November, fine. So if it is after 15th October, the temperature starts to fall down after 15th of October. So what will happen to atmospheric pressure? The pressure will also increase. There's an inverse relation between pressure and temperature. So the pressure will also increase. So वो जो जल रहा है वो यहीं रह रहा है, उसे escape वे नहीं मिल रहा ऊपर. That is like multiple चीज़ें जो है उस वक्त काम कर रही होती हैं. अब आए हो तो पता चलेगा अक्टूबर में क्या होता है यहाँ. अरे यही रहता है. और अच्छा, और एक कहानी, उस टाइम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का दौर शुरू हो जाता है. हवा का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आता है, ठंडी हवाएं तभी तो ऊपर से आ रही हैं, तो वो डायरेक्शन इज दिस. सो डायरेक्शन भी हो गया, हवा भी ठंडी हो गई, पराली भी जल गई, डिले भी हो गया, सब कुछ हो गया, एंड दैट ऑल कल्मिनेट्स इनटू दिस थिंग which is called as a smog, and Delhi becomes a gas chamber. करते हैं, होता है, खेतों से उठा के ले जाते हैं. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा. इसमें मैं बोलूँगा उनसे कुछ ना साउंड सिस्टम लगाएं, मैसेज नोटिफिकेशन जैसा कि कोई मैसेज करे तो हमें पता चले. अच्छा, हाँ तो आनी चाहिए बट okay, so yesterday we were talking about Warren Hastings, and we have seen that a major act that came during his time was the Regulating Act 1773, and this was the first act that was brought, and under the provisions of this act, Warren Hastings was let's say his designation was at least upgraded from Governor of Bengal to Governor General of Bengal, giving him some superseding powers over the presidencies of Madras and Bombay. Achha. One of the major contribution of Warren Hastings was his judicial system or the judicial reforms. He recognized the judicial system and he established the civil and criminal courts, and rather than he created a structural legal framework, and more or less that exists even today. More or less, of course, modern times के हिसाब से उसमें there were modifications, modern times के हिसाब से उसमें जो भी changes आते रहे, that is the need of law, but he introduced this Adalat system or the court of law, or the good thing about that is that most of the laws that you see, or most of the courts and the judicial system you see, it is a blend of Indian tradition with the British system. The way the courts are being structured, let's say constructed, or courtrooms are there. So these are all British system, but they are being blended with what? They are being blended with Indian traditions. They are being blended with Indian tradition, and this is one of the major, you can say, the reforms that he initiated. Also, the main, see again, at any point of time, you will see in history that the company never compromised, or the British by and large never compromised with their commercial aims. So their main aim was commercialization, their main aim was revenue, their main aim was earning money, and you will not find that someone is doing good for a larger cause. No one was doing good for a larger cause. Every administrator in the British Empire or the company Raj was all focused on one thing, that how to gain commercial profits, and so did he. Because now, mostly if you will see that after the Treaty of Allahabad, the revenue collection was with British. The revenue collection of Bengal, Bihar and Odisha, that is the Diwani, was with the British. So now they need to,
he started a process which will be more intensified by Cornwallis, but he was the one who started to streamline the revenue collection by introducing a more systematic approach, especially with the zamindars. So he tried to re-establish the relationship with the zamindars. Although permanent settlement or the zamindari system, what we popularly known as, that will be formalized later on, but the process to do that has been started by Warren Hastings. Fine. Apart from that, he did some other works as well. That he was, which was the first newspaper to be published in India? जनरल नॉलेज है. वो सेम है. हाँ ठीक है, बेटर. ये चल रहा है, ले जाओ, उसको हटा दो. हाँ, इसको भी हटा दो. सेम है यार. कॉफी पिलवा दे पर, ये बाद में देख लेना. You don't know. तो न्यूज़पेपर तो गांधी जी ने भी निकाला था. अरे यार, अब ये वाली हेल्प की नहीं चल रही है. हम ऐसा नहीं खेलेंगे. इसकी नहीं चल रही. यस. हाँ. James Augustus Hickey started the Bengal Gazette, and that was during the time of Warren Hastings. So sometimes question can be twisted like this, that the first newspaper of India, consider the following statements related to the first newspaper of India. Statement 1, it was started or it was founded by James Augustus Hickey. True or false? True. The language of that newspaper was Bangla. No, it's English. Yes. The Bengal Gazette, and it was in English, and newspaper था तो public था, and James Augustus Hickey ने इसको शुरू किया, और the Governor General at this point of time was Warren Hastings. तो कई बार इतने बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं. अच्छा, मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक एलिमेंट बता रहा हूँ, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, वो भी सुन लो. देयर इज़ अ वेरी यूजलेस काइंड ऑफ बुक विच यू पीपल थिंक इज़ यूजलेस. इट्स नॉट यूजलेस एट ऑल. और आपने हो सकता है उसको ख़रीदा भी होगा, और आपके पास मोस्टली लोगों के पास रहती भी है, एंड दैट इज़ ल्यूसेंट जनरल नॉलेज. ल्यूसेंट जनरल नॉलेज नहीं है? है? You have? Anyone? You have? Lusent general knowledge? सुना है? Yes, sir. सुना है. उसको ले लो. सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? 2024 था. 23 में 11 सवाल थे उस किताब से. Seems useless, that is मैंने कहा. बाहर जाओगे मिल जाएगी बाजार में. और उस किताब को कोर्स वाइज मत पढ़ना कि पेज 1 से पढ़ रहे ना. Make a random reading of that book like a novel. कुछ भी उठाया पढ़ लिया. मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब उसमें लगा हुआ. एनवायरमेंट, साइंस, टेक, न जाने क्या क्या. इतनी मोटी किताब है, हार्डली है कि 200 समथिंग बाहर मिल जाएगी. किसी भी शॉप, ऐसी कोई शॉप नहीं होगी जहाँ ये किताब नहीं मिल रही होगी. ठीक है, 280 आई थिंक अंडर 300 की बुक है ये. बट अगर आप उसको रैंडमली पढ़ना शुरू कर दोगे तो योर जनरल नॉलेज विल इम्प्रूव. KBC kind of knowledge. Sometimes 5 to 10 and sometimes even 15 questions are of this nature. And we are like, yaar, ye phas gaya. If you will observe every exam, 8 to 15 questions are of this type. KBC type question होते हैं ना, जो वो थोड़ा ऊपर पूछ लेते हैं कि किसका, जैसे कल नहीं, मतलब वो एपिसोड तो पुराना होगा, कल मैं देख रहा था, उसमें तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. खैर वो क्वेश्चन सिंपल हमें लग रहा था, बिकॉज मतलब एक ये था कि वन थिंग अबाउट हु वाज द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल, इन द ड्रामा ड्राइंग द लाइन्स.
अब उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन ऑफ कोर्स साइरल रेडक्लिफ का नाम था तो वो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, लेकिन अगर उसमें यूपीएससी इतना सीधा तो है नहीं कि 4 ऑप्शन में साइमन और इन लोगों का देगा, किसी और का भी दे देगा, वो चारों का नाम दे देगा, वो क्रीक का भी नाम दे देगा, वो ड्यूरेंट का भी नाम दे देगा, वो रेडक्लिफ का भी नाम दे देगा. बट दिस काइंड ऑफ जनरल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे यूज्ड टू मिस दिस पार्ट. बट ट्रस्ट मी दिस इफ यू विल, और उसके लिए कोई अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं. जस्ट लाइक बिफोर यू आर गोइंग टू बेड, randomly 5-6 pages, like longest, largest, biggest. This is a very general knowledge kind of stuff. But sometimes, you know, this will hit. So even if you are able to solve 5 to 7 questions through that particular way, बहुत है. तो वो ले लेना, उसको पढ़ो, उस किताब को अच्छे से करो. चाहो तो सिस्टमैटिक कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं भी करोगे, इफ यू विल डू इट इन अ रैंडम वे, that will definitely help you. Shukriya. Fine. So get that book, that will help you. कल कहाँ थे? ऑनलाइन? क्यों? Where do people live? तब कुछ नहीं बोलूँगा. द्वारका इज हरियाणा, मतलब दिल्ली में बस वो है, अदर साइड ऑफ दैट. खैर, सो द फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट इज James, the Bengal Gazette by James Augustus Hickey, that was during the tenure of this. Acha. Yesterday we were talking that when you will go to a new place, what the first thing you do is try to understand the law, try to understand the मतलब the system as well. और कहीं भी जाओ तो वहाँ का लॉ समझना ज़रूरी है कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है. For them, one thing was sure that they are here to stay. They are not here for, lootne nahi aaye the. They were here to stay. This was very clear to them. So when they came, and Warren Hastings realized that now we have to develop a system, but for that we have to understand the society first. And here they have to tell, the administrators have to tell the people that yes, we are here for your welfare, we are here to do something for you. So this was the time when you will see like Calcutta Madrasa that was established, Banaras Sanskrit College that was established during this period. Sanskrit College एक और Calcutta में भी open हुआ था. So that was so to give people a belief, a trust that we are here for you. Second, Asiatic Society of Bengal was established during the tenure of Warren Hastings. What? Asiatic Society. Royal Asiatic Society. Royal Asiatic Society was established in this period, and the major thing that was done was translation. So I told you the reflection of the society here is, if you have to understand a society, you have to understand the law. And what was the law? And understand one more thing. In modern times, constitution is the law. How you will understand India? Understand the constitution, understand the preamble. You will understand the India as a country. But at times when there is no written constitution, religion is the constitution. So by this point of time, we have no codified laws. We have no written constitution. But yes, there were certain things which were being treated as the book of laws. So Hindus were governed by the Hindu law, and the Muslims were governed by the Shariat. So this Asiatic Society translated 2 important books. Number 1, was Manusmriti. The first book that was translated was Manusmriti, and the Manusmriti was translated into English as the Code of Gentoo Laws. The Code of Gentoo Laws. So this is the English translation. The task was carried out by this society. First thing. Second important book that was translated, it was Fatwa-e-Alamgiri.
Fatwa Alamgiri. Fatwa Alamgiri means it was the collection, it was a book on administrative actions of Aurangzeb. It was a book on the administrative decisions and actions of Aurangzeb. So two important books that got translated. So Manusmriti was translated from Sanskrit and Fatwa Alamgiri was translated from Persian into English, so as to understand the legal system, so as to understand this. Fine. In his duration, another major act. So there in 1781, another act was an amendment to the existing act was being brought. But now, in 1784, Pitt the Younger, William Pitt the Younger. Now, why he is called Pitt the Younger? Because he is the youngest prime minister in the history of England. Till date, he was 23, and he became the prime minister of years. So Pitt the Younger, William Pitt the Younger, and he came up with the Pitt's India Act, also known as the East India Company Act 1784. Pitt's India Act 17. So again, tenure of Warren Hastings 1785 tak he will be there. So Regulating Act 1773 was amended 1781, and after carefully reviewing this, the company's affairs were investigated because of certain reasons that from 1775 to 1782, the company was involved in war with Marathas. उसका एक रीज़न था. If you see Madras presidency, they have achieved the southern domination. If you see Calcutta presidency, what they have achieved was the crown and was the gem in the British crown. But Bombay presidency was not able to achieve the way the Calcutta or the Madras presidency has achieved. So what they did, we'll talk about Marathas maybe tomorrow. So what they did was they started to bring up, they started a tussle with the Marathas. Which further, and that was questioned by Calcutta. In 1775, they started the war. So, of course, 1773 Act aa chuka tha. So, Calcutta was... So, what happened that there was a deadlock which was created between Bombay and Calcutta. So, Bombay एक decision लेता था, Calcutta उसे undo कर देता था, cancel कर देता था. फिर बॉम्बे उसके अगेंस्ट में एक डिसीजन ले लेता था, फिर कैलकाटा उसे कैंसिल कर देता था. तो ये बार बार उस टाइम पे चल रहा था. सो देयर वाज अ नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अनदर थिंग दैट ओवरऑल, क्योंकि कंपनी के फाइनेंसेस जोड़ दिए गए थे. अब कंपनी के फाइनेंसेस मतलब ऐसा नहीं था बॉम्बे का अकाउंट अलग चल रहा है या कैलकाटा का अकाउंट अलग चल रहा है, नहीं. दे वर हैविंग अ कॉमन अकाउंट. द कंपनीज डायरेक्टर्स देमसेल्व्स अग्रीड दैट दिस वॉर हैज कॉस्ट अ लॉट टू देम. सो they went for another loan of £1 million. First, they asked for a £10 million loan. चले गए. अच्छा, सेकेंड, अब फिर वो £1 million और दे दो. तब लगा कि नहीं, the affairs of the company needs to be regulated. And this person, 1783 में, maybe 23 or 24 years, he became the youngest, and he is till date the youngest prime minister of Britain.
and this act was brought under his tenure. So if you see what are the major things, it started a dual government or a dual control. First thing, his father was also prime minister. But he was when you read the English history, you will find that this person was an able administrator. ठीक है? But he was an able administrator. Fine. So what was done, that now there will be two, bodies to govern the company. There will be two bodies to govern the company. Okay. So first, there were now the company's political and commercial activities were separated. Now there will be two separate bodies who will be looking for companies, corporate or let's say commercial or corporate activities. So there will be a court of directors and a board of control. There will be a court of directors and a board of control. So the company's commercial, so company's function will be, or you can say the company will be represented by court of directors. So C for commercial or corporate and C for court of directors. सिर्फ इतना याद रखना, confuse नहीं होना, because there's a confusion, board of directors or board of control or court of directors or court of control. Achha. So this was first thing, that and this board of control was, you can say that the British government was, or you can take it the other way, that the British government was represented by board of control and the company was represented by court of directors. So there was a dual control. There was a dual government or a dual control over the company because of the reason. So political functions कौन देखेगा? Political functions was, अच्छा. In this act, one major provision that the Governor General was granted a veto power. क्योंकि बार बार टसल चल रहा था, बॉम्बे कैलकाटा, so the Governor General was granted a veto power. Veto power पहली चीज़ कि अगर उन्होंने कह दिया है तो फिर, अच्छा, the council में कितने members थे? 4. They were reduced to 3. पहले there were how many members along with the Governor General? 5. Now they were reduced, the Governor General plus 3 members. But the Governor General was granted veto power. And here you can say that Madras and Bombay presidencies, now they became subservient to Calcutta, and now officially you can say that Calcutta became the effective capital of the British India. After this act, Calcutta became the effective capital of British India. अच्छा, एक और चीज़ हुई, जैसे ही कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनेगा, as soon as someone will be appointed to the court of directors, क्योंकि वो कंपनी की साइड से थे, कोर्ट इज कंपनी
So they had to declare their प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर क्लॉज डाला, बिकॉज इससे पहले कौन थे, इसके बाद जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स वापस जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलेगा इम्पीचमेंट. सो अंडरस्टैंड, यस, करप्शन चार्जेस, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उन पर चार्ज लगेगा. So corruption, maladministration and abuse of power. So British Parliament, so from 1788 to 1795, there was an impeachment trial on Warren Hastings on the grounds of corruption, maladministration and abuse of power. Though he was acquitted, उन पे impeachment कभी हुआ नहीं, चार्जेस कभी प्रूव नहीं हुए, ही वॉज फाइन. देन फ्रॉम 1785 to 1786, 1785 to 1786, it was John Macpherson who was the next. Or rather, he was an acting Governor General. He was a short tenure. Macpherson, yes. Pherson. But then came the next Governor General. 1785 to 86. हाँ. So Warren Hastings is still 85, but the tenure of Cornwallis starts from 86. So sometimes the question can come like this, क्योंकि एक साल के छोटे छोटे differentiation पे है ना. So question can come like this. So it is John Macpherson for few months rather. So of course उसका tenure इतना कम था कि he could not implement any significant policies. He could not do any significant policies. Then came Lord Cornwallis, 1786 to 1793. (1786 to 93). Two important things for which you have to remember Cornwallis. Number one is that he is the father of civil services in India. First thing first is that he is the father of civil services in India. How? वो तो बहुत आगे आएगा. That will be Act of 1853. No. All of his whole tenure can be summed up into the Cornwallis Code of 1793. Cornwallis Code of 1793, also known as the Civil Services Code. अच्छा, एक और चीज़, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द सेम पर्सन हु साइंड द सरेंडर डॉक्यूमेंट्स इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश. तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा था वर्ल्ड हिस्ट्री में. उसमें जब जो इंग्लिश सरेंडर करते हैं विद द अमेरिकन्स, ही वॉज द पर्सन, ही वॉज द कमांडर जिसने सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन किए थे. देयर आफ्टर ही वॉज सेंट टू इंडिया एज गवर्नर जनरल. अच्छा, इसने आके रिफॉर्म्स किए. व्हाट वाज दिस कॉर्नवालिस कोड? ही फाउंड दैट देयर इज टू मच कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑफिसर, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज एवरीथिंग. उसने बोला नहीं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट वी नीड टू डू इज सेपरेशन ऑफ पावर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू डू इज सेपरेशन ऑफ पावर. उसने कहा एक डिस्ट्रिक्ट में 3 ऑफिसर्स होने चाहिए विच विल बी मोर और लेस ऑफ इक्वल रैंक. नंबर 1 इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर.
District collector will be responsible for revenue and general administration. District collector will be responsible for revenue and general administration. Then there will be a police superintendent. There will be a police superintendent who will be responsible for law and order, who will be responsible for law and order, and there will be a district judge who will be responsible, who will be having magisterial power, will be having, and he'll be responsible for the judicature of the district. And till date, from 1793 till date, this we have the same pattern, we have the same system throughout the country. इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं कर पाया कोई, सब जगह यही सिमिलर है. कहीं डेजिग्नेशन ऑफ कोर्स कुछ ऊपर नीचे हो जाते होंगे, जैसे यूपी की तरफ जाओगे तो डीएम हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाता है. जब सेंट्रल इंडिया की तरफ जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाता है, वो अब भी कलेक्टर ही है. फाइन, कहीं आप बोलोगे सर कमिश्नरेट सिस्टम है तो वहाँ थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है, बट ओवरऑल दिस इज अ सिस्टम which still exists, not just in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and many of the African countries which were being colonized by British. Replacement दो, नया बताओ कुछ. भाई कितने साल हो गए? 220 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, 230 साल, 231 साल हो गए. 230 years and we have not found a replacement to this system. Why? Because this is efficient. Simple. We have never said that the colonial laws are bad. No. You must have polity war. Oh yeah. So you must have read about doctrine of eclipse and doctrine of severability. पढ़ा है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये क्या था? एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? समथिंग टू हाइड, है ना, ओवरशैडो. सो लेट्स से देयर इज अ कॉलोनियल लॉ, देयर इज अ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड लॉ which in itself is not bad, but it is in contradiction with any of the constitutional provision. So that law will not cease to exist, rather it will become dormant or it will be eclipsed by that particular constitutional provision. Till that constitution provision is there, it will eclipse that. But the point at which the constitutional provision is removed by any way, that law will come back. This is doctrine of eclipse. एक पूरा लॉ, अगर लॉ का नेचर अच्छा हो सकता है, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहेगा, फंडामेंटल राइट रहेगा, वो क्या होगा, एक्लिप्स्ड रहेगा. वो लॉ डेड नहीं हुआ है, वो डॉर्मेंट है. जिस दिन ये हट गया, ये अपने आप आगे आ जाएगा. राइट टू वर्क, बहुत सी चीज़ें उसके साथ हट गई थी, मतलब छुप गई थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, सो इट लीगल राइट, हाँ वो लीगल राइट. तो जैसे वो फंडामेंटल राइट जब तक था तो बहुत सी चीज़ों को वो एक्लिप्स कर रहा था, लेकिन जैसे वो फंडामेंटल राइट से हटा, दैट इनकंसिस्टेंसी वेंट, सो दैट केम बैक, वॉट एवर द अर्लियर लॉज वर देयर. इसीलिए फिर ज़मींदारी को अबॉलिश अलग से किया गया, है ना. हाँ, अच्छा, देयर इज अनदर डॉक्ट्रिन दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ severability. Doctrine of severability says that, let's say there is a colonial period law or a pre-independence law, and there are certain provisions of that law which are not the whole law, but certain provisions of that law which are inconsistent with the constitution. Not the whole law, only certain provisions. So what will happen, automatically all those provisions will be severed, be cut off.
Rest law will exist in its original form. Let's say the Police Act. So the Police Act in reality was formed for what? For a government which was having a police state. So is Police Act applicable the way it was in 1800s? No. All those provisions. So the basic act is there. The Police Act is still, it is the same, the old one. उसके सारे प्रोविजंस कट नहीं हुए या पूरा एक्ट नहीं हटा दिया, सिर्फ वो प्रोविजंस हटे जो कि इनकंसिस्टेंट थे विद द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. तो ये हम भी एक्नॉलेज करते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सारे गलत थे, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी थी, उसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी. फाइन. सो दिस वाज डन. And that is why this is a very strong administration. This is a very strong administrative system which has been proven successful in general administration overall the country, or even you will see in Pakistan still have the same system. They call it CCS, Central Civil Services. What is IS here? Because they have, वहाँ भी तो यही system था ना. They have the similar procedure of examination. They have the similar procedure of examination because they are also derived the same system. अब जाहिर सी बात है पैटर्न और कुछ चीज़ें तो सेम होगी, बट हाँ the process and these things are more or less similar. Fine. अच्छा. So this is one thing. Another important, and I told you there are 5 pillars on which the British Empire was standing in India. First one was no. कल बताया था. रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड कुछ था, पॉलिसी थी कोई सी. was the policy of kingmaker. Yes. Was the first thing. Don't be the king, be the kingmaker. Don't be the king, be the kingmaker. Though this was devised by Dupleix, but it was all implemented by Clive and his successors. Now come the second pillar. And the second pillar was परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सिस्टम. परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सिस्टम. Fine. So the permanent settlement. Now we'll talk about, we'll not just talk about the permanent settlement. We'll talk about land revenue system in British India. So it's a separate topic. सारे एक ही साथ पढ़ लेंगे. Land revenue system in British India. So no doubt land revenue was one of the major sources of the British in India, and they have introduced various type of land revenue systems at various point of time. No doubt the most effective in that was the zamindari system, or the permanent settlement that was introduced by this. So what happened? Permanent settlement of what? Of the land revenue. पहले क्या था? सालाना बंदोबस्त था. सालाना बंदोबस्त as in that every year the land revenue will be computed and
you have to pay accordingly. For example, when you will see the Mughal time, the important land revenue system was the Dehsala system. So what was there? Their land revenue was fixed for 3 years. So today, let's say in 2024, the land revenue is fixed. It is based on the average. So the average of last 10 years cultivation and price was taken, and whatever the average of last 10 years was there, 1/3 of that was computed as revenue. Fine. So, and this revenue was fixed for 3 years. Then after 3 years again it will be computed, and then you have to pay. But what they did, they fixed not only the land revenue, but they also fixed the land rights. They not only fixed the land revenue, but they also fixed the land rights. Basically उन्होंने कहा कि अब जो ज़मींदार है, he is the malik of the land. One thing. Why I am calling this as a pillar? Because zamindars were given various rights. Their rights were not just restricted to collection of the land revenue. Their rights were way beyond that. They had certain judicial power. They had law and order. They have certain other powers as well. Fine. So what happened, that the land revenue here was collected from farmers. The land revenue was collected by zamindar, who was made the owner of the land. The land revenue was collected by whom? The zamindar, who was made the owner of the land. So what happened because of this? That the farmers who was actually working on the land became tenant on his own land. तो इस पूरी ज़मीन का मालिक कौन? ज़मींदार. भले वो किसान की थी. अब किसान अपनी ही ज़मीन पे क्या बन गया? किराएदार बन गया. He became a tenant on his own land. Now, the land revenue was that whatever the land revenue of your area is fixed, you have to collect that from the farmer, from the peasant, and whatever is the land revenue collected, whatever is the land revenue of your region is, you will collect that. Of that land revenue, 10/11 is company's share, and 1/11 will be the share of zamindar. But incentive के basis पे हाँ, but this zamindari was not absolute. This zamindari was conditional. And why the condition was that unless and until you, and that was called as the sunset law. It says that a zamindar can hold his zamindari until he pays the taxes. Let's say today it is 31st March, for example. So if by 31st March, any zamindar is not able to pay his tax. So if any zamindar is not able to pay his tax or has not paid his tax by the sunset of that particular day, his zamindari will be confiscated and auctioned. अब ज़मींदार टेंशन में रहते थे. उन्होंने बोला हमें कोई मतलब नहीं. मान लो किसी का ज़मीन, मान लो कहीं का रेवेन्यू निकल के आता है 1100 रुपीज़. अच्छा, तो इसका बाइफर्केशन क्या होगा? मान लो किसी जगह का लैंड रेवेन्यू कितना निकल के आया? 1100 रुपये. ठीक है, तो उसमें से 1000 रुपये किसके? EIC के, और 100 रुपये किसके? ज़मींदार के. अच्छा, लेकिन ज़मींदार को अगले साल भी इतना पैसा ही जमा करना पड़ेगा, हर साल 1000 रुपये, इर्रिस्पेक्टिव फसल कैसी है, बिकॉज द लैंड रेवेन्यू वॉज
फिक्स्ड, बिकॉज द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड. तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट कि फसल कितनी हुई है और कैसी हुई है, उसको इतना जमा करना पड़ेगा. तो ज़मींदार हर वक्त टेंशन में कि मैं कलेक्ट तो कर रहा हूँ लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है अगर अगले साल. तो ज़मींदारों ने क्या शुरू कर दिया, जहाँ आई एम गिविंग जस्ट अ हाइपोथेटिकल फिगर, जहाँ उन्हें 1100 कलेक्ट करना चाहिए था वहाँ वो 3300 कलेक्ट करना शुरू कर दिया किसान से. And here it starts the exploitation of farmers. कुछ भी नहीं. Actually, they were getting nothing out of it. तो नहीं मिल रहा था, बस कि जिंदा रह के अगले साल की खेती कर लें. That's it. अच्छा, they had no choice. क्योंकि एविक्शन हो जाएगा ना, अगर वो काम नहीं करेगा तो एविक्शन हो जाएगा. रेंट तो उसे पे करना है, रेवेन्यू तो उसे देना है. आज के टाइम पे आप टैक्स देने से मना कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. बस पूरी दुनिया की गवर्नेंस जो है वो टैक्स पे चल रही है. मज़े की चीज़ ये है, जो रिच क्लास है वो टैक्स ही नहीं पे करता. वो देते ही नहीं. उनकी कंपनी भले ही कॉर्पोरेट टैक्स दे रही होगी, बट एज एन इंडिविजुअल दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस. सिंपल सा. आइडियली होना क्या चाहिए, दैट द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया शुड बी द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री. सिंपल. अगर प्रोग्रेसिव टैक्स लॉज हैं या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, वी हैव अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, राइट? सो आइडियली अकॉर्डिंग टू दैट द रिचेस्ट पर्सन शुड बी द highest taxpayer. Is that the case? No, simple. तो टैक्स तो आप किसी तरीके से अवॉइड कर ही नहीं सकते, स्पेशली व्हेन यू आर डाउन द ब्रैकेट. इफ यू आर इन दिस, हाउ बिहाइंड यू आर इन द that queue. Let's say arrange all the people of India in one queue depending upon their income. So आप जितना पीछे हैं, आपके ऊपर बर्डन उतना ज़्यादा है. लाइक GST, यू विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम. सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दैट एज द इनकम इंक्रीजेज द रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. बट व्हेन यू सी GST or any kind of indirect tax that is being imposed on us, they are all regressive in nature. For example, you are purchasing a mobile phone. Let's say, how much? 18%. 18% is on mobile phone. Let's say a mobile phone costs 1 lakh rupees. How much tax you have paid in that? 18,000. Let's say that 18,000 is, and your annual income is, let's say, 18 lakh rupees. Assume karte, just for a calculation ease out. So how much is that of your annual income? 1%. 18,000 is 1% of your annual income you have paid as tax. Same phone is purchased by Mr. Ambani. Same price. Same 18,000 rupees tax. What is the percentage of that 18% of his annual income? Sir, ऐसे ही उठा के दे देंगे, बोलेंगे 18,000 ले जाओ. तो किसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ? जिसकी इनकम कम है. और मान लो किसी की इनकम मान लो 15 लाख हुई तो 10 लाख होगी तो इम्पैक्ट और बढ़ेगा. फॉर्च्यूनर गाड़ी देखी है? कितने की आती? मैक्स उसका जो चल रहा है, ऑन रोड जो चल रहा है, आई गेस दिल्ली का ही 60 है उसका टॉप मॉडल. स्टार्टिंग उसकी 35 है. मतलब बेस प्राइस जो है, बेस मॉडल इज हाउ मच? 35. So if a model is sold for 45 lakhs, how much you think Toyota company is earning in that? Net profit.
7 to 10 lakhs per car. 7 to 10 lakhs per car. So they're hardly earning 50,000 rupees as net profit. Who is the highest earner in that? Government of India. अभी तो एक शोरूम अलग होता है, ऑन रोड अलग होता है जगह। उसका नेट प्रॉफिट मतलब उसका कॉस्ट भी जोड़ो ना, उसने इनपुट्स भी तो लगाया है, उसका भी कॉस्ट है। तो पूरी सारी चीज़ों को हटा के टोयोटा कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होता है, अगर वो 45 लाख की कार सेल करता है तो 45,000 रुपये होता है। एक्सक्लूड एवरीथिंग, दैट इज द सैलरीज एंड वट एवर पर यूनिट अगर हम निकालें, दे हार्डली अर्निंग 40, 45, 50,000 रुपीज। एंड हु इज अर्निंग हाइएस्ट इन दैट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीएसटी, क्योंकि लग्जूरियस कार है तो कितना चला गया? 28% जीएसटी हो गया। तो 28% उन्होंने, लेट्स से 35 इज द एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है, तो 35 का और जोड़ लो 10-12 लाख रुपए, तो यही हो गया। अच्छा, देन यू हैव टू टेक एन इंश्योरेंस, सो ऑन दैट इंश्योरेंस ऑल्सो यू हैव टू पे जीएसटी, दैट इज 18%। अच्छा, देन यू हैव टू पे रोड टैक्स, टू पे ना, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ना गाड़ी का। आरसी नहीं बनेगी। कितना? 8% ऑफ द बेस प्राइस। सो 28, 18 और 8, calculate everything on the base price of the model. This is what government of, acha, if someone has earned 35 lakh rupees, if someone has earned 35 lakh rupees, he must have paid income tax on that as well. To get to that 35, he must have paid roughly around 35 lakh पे, I think 3.5-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसका टैक्स बनेगा, तो वो उससे भी आएगा। सो 28% ऑफ, लेट्स से 30 lakhs ही ले लो, चलो हटाओ 40 lakhs ले लेते हैं, कितना हुआ? 2,80,000, 40 lakh का 28%, 12 to 30% होता है 12 lakh, 12.8 and 2.8, around 11.5 lakh rupees is GST on the car. अच्छा, then you will have an insurance of, अगर इतना है तो हाँ, उसका 50-60 हज़ार का तो इंश्योरेंस होगा। उस 50-60 हज़ार पे 18% और GST लगा, 50-60 हज़ार पे लगा, तो लेट्स से 10-12 हज़ार रुपये वो गया। एंड 8% रोड टैक्स ऑन द प्राइस, देन 4/8 how much? 32, 3,20,000. So 11, government has earned almost 15 lakh rupees. वो तो अब तो हटा दो, वो तो ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ हुआ ही नहीं है। गवर्नमेंट हैज अर्नड हाउ मच? 12 से 15 लाख रुपए। हाउ मच टोयोटा कंपनी हैज अर्नड? 40 to 45,000 नेट प्रॉफिट। तो यू कैन नॉट, एक और चीज़ है, अच्छा एक और चीज़ रहेगी, एक होता है TDS, आपने पढ़ा है, सुना होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज TCS. So when you are buying any HNI, high net, मतलब you are buying something which is of high price, then that company will collect 1% as your tax, which will be deposited in your PAN. So when you will pay your taxes, that 1% will be released to you. तो 1% TCS भी जाता है, tax collected at source. Gambling is bad. अच्छी है, बुरी है? बुरी है। सारा फैंटेसी लीग चल रहा है। अरे भाई साहब, उसमें सबसे ज़्यादा सरकार कमा रही है, इसीलिए बंद नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा ही कमा रही है। अरे 30% तो उस पर आपके ट्रांजैक्शन पे लग रहा है, जीतोगे उसका क्या, उस पर 30% प्राइस मनी पे भी टैक्स है। क्रिप्टो खैर वो तो हटा दो, वो कोई इतना बड़ा, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, मतलब ठीक है, वो तो क्रिप्टो करेंसी और वो क्योंकि उसका मिसयूज़ हो रहा था। बट इफ़ यू सी फैंटेसी, मतलब आता ना, तो स्पॉन्सर्स भी हो रहे हैं और सारे एड्स आते रहते हैं। जैसे भी IPL सीज़न शुरू होगा, इनके एड्स बढ़ जाएंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या हो गया है। मैंने आज तक किसी को जीतते हुए नहीं देखा। आई डोंट नो एनीवन, मतलब कभी तो सुना होगा ना कि अच्छा कोई बता, हाँ मेरे वो जानने वाला KBC में चला गया, ठीक है, मतलब सुनने में तो आता है कोई तो जा रहा है।
बट आई हैव नेवर सीन समवन हु इज विनिंग इन दैट, एंड गवर्नमेंट नेवर सेज नो. गवर्नमेंट कहती हाँ फाइनेंशियल करोगे तो आपको लत लग सकती है और ये सारी एडवाइजरी आती है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी हम बंद कर देंगे. क्योंकि गवर्नमेंट उसमें 500 रुपये के ट्रांजेक्शन पे 280 रुपये सरकार के पास जा रहे हैं. 5 लोग 100 रुपये अगर लगा रहे हैं और उसमें से कोई एक पैसा जीत रहा है 200 रुपये, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा 200 रुपये उसने कमाए. 200 भी कहाँ कमाए, उसने तो 100 रुपये ही कमाए. 100 तो उसके लगे हुए थे ना. उसने कमाए 100, सरकार ने कमाए 280. एट लास्ट सरकार का ही फायदा. मुझे उससे 4% सेस का मामला कभी समझ में नहीं आया. क्यों लगाते हैं, उसका कुछ काम नहीं है, बट लगता है 4% सेस सबसे बड़ा स्कैम लगता है गवर्नमेंट. आप एक बात बताओ, जब इतनी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमेशा आप देखिएगा मार्च अप्रैल जब आईपीएल वाले सीजन में, अभी नहीं आएगी न्यूज़, जैसे आईपीएल सीजन आएगा ना गवर्नमेंट कहेगी दिस मंथ वी हैड रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, दिस मंथ वी हैड. क्यों नहीं होगा? लोग लगा रहे हैं पैसा, तुम ख्वाब दिखा रहे हो, बेच रहे हो, लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं. सो यू कैन नॉट इवेट टैक्सेस टुडे. Think about the suppressed and the depressed class in 1793 or let's say in the 18th and the 19th century. The किसान कहाँ से टैक्स इवेट कर पाता? आप आज नहीं कर सकते. You cannot say and raise कि we will not pay taxes. So this was the zamindari system, and this is where I feel that a colonial mindset that is actually deep rooted in us. When I say farmer, tell me, when I say farmer, what is the first image that comes to your mind? Yeah. हाँ बताओ, कोई भी बताओ. खेत, गमछा और एक धोती में आदमी खड़ा होगा. सबकी यही है. आपने उसे एक दीनहीन, दया का पात्र कैरेक्टर बना रखा है अपनी लाइफ में, राइट? सिमिलर काइंड ऑफ इमेज. हाउ दिस हैपन? अरे आपने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया. जनरल, don't talk about the Kisan of UP and Haryana, Western UP and Haryana. Don't talk about them. They are very rich. BMW में घूम रहा है वो, है ना? तो इधर की बात मत करो, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ. There is a reason. There are 2 reasons. तो ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. Like when you see farmers of Eastern UP, Bihar, Odisha, Bengal, इधर भी थी, लेकिन अरे सर रुक तो जाओ, सुनो. They are in distress. But if you see from Punjab, Haryana, Western UP till गंगा जहाँ तक जा रही है ईस्टर्न यूपी में, कानपुर तो थोड़ा सा और आगे तक चलेगा, यू विल फाइंड दैट द फार्मर इज कंपैरेटिवली रिच. व्हाई? नहीं, वो तो ठीक है, गंगा प्लेन पंजाब में तो नहीं है. देयर इज अ रीजन टू दैट. इफ यू विल सी इन दिस बेल्ट, देयर इज एन ऑल्टरनेट प्रोफेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन पैरेलल विद द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बिल्कुल है. लुधियाना इज़ फेमस फॉर समथिंग, अम्बाला इज़ फेमस फॉर समथिंग, मेरठ में कपड़ों का स्पोर्ट्स का काम हो रहा है, कानपुर में लेदर का काम हो रहा है, मुरादाबाद में पीतल का काम हो रहा है. तो क्या होता है, अगर हम किसान एज अ लेबरर की भी बात करें, तो वो 4-6 महीना कहाँ काम करेगा? खेत में. 6 महीना उसके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है. बट इफ यू गो टू ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन. देयर इज नो, बस वहाँ से वो छोड़ अब क्या हो गया, यहाँ सब लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर दिया और उधर का जो लेबरर है वो इधर आके काम कर रहा है. इनकी खेती भी अच्छी हो रही है और इंडस्ट्रियल ऑप्शन भी इनको मिल गया.
आप देखो ना यूपी में, आप देखोगे तो मुरादाबाद में, रामपुर में, अलीगढ़ में, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, तो हर जगह एक ऑल्टरनेट इंडस्ट्री डेवलप हो गई। सेम इज़ विद पानीपत, सोनीपत, अंबाला, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर तक चले जाओगे तो ये पूरा बेल्ट जो है वो साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियलाइज हुआ। तो यहाँ का जो फार्मर था, सर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ योर ओपिनियन ऑन साउथ? आई एम कमिंग टू साउथ एज वेल, डोंट वरी। But the reason is that despite being on the same geographical belt of Ganga plains, Eastern UP, Bihar, Jharkhand, Haryana, Bengal, Odisha, there's a wide range of migrant labor from that side, and that is reaching in every part of the country. ना बिहार का migrant labor कश्मीर तक में काम कर रहा है। ये कहाँ नहीं है सर? कहाँ नहीं है, आप ये पूछिए। वो साउथ में भी दिखेगा, वो आपको हर जगह दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं वहाँ, और वहाँ कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन मुझे नहीं लगता नियर फ्यूचर में होगा भी, क्योंकि कंट्री का लेबर सप्लाई का बैलेंस बिगड़ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। रिसोर्सेज तो हैं, झारखंड, बंगाल नज़दीक है, सी पोर्ट नज़दीक है, लेकिन अब आप ये देखिए कि हाउ द इंडस्ट्रियल साउथ की बात करें तो देयर इज़ ऑल्सो गुड बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड agriculture. The reason they have fertile field, apart from that, they have very close access to the seaports. That is why the rate of or the density of industrialization is higher in south. When we'll read about Mandal Commission in post-independence history, you will find that the oppose or the protest against Mandal Commission was higher in northern India as compared to southern India, because the people in South India, they are not dependent on government jobs largely as to what it is compared to North India. रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? किसने बोला? कौन सा रॉ मटेरियल आ रहा है? और वो वूल कहाँ से लाओगे? एग्रीकल्चर, वो कोयला है, तो कोयला तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। द गुड क्वालिटी कोल इन इंडिया इज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बट व्हाट अबाउट द वूल? हाँ, तो कोस्ट लाइन से सिर्फ इंडस्ट्रीज के सिर्फ आप सोर्स ऑफ फ्यूल की बात कर रहे हो, सिर्फ रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे हो। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं इस तरफ? अरे तो सिर्फ एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल थोड़ी होता है। अच्छा, टेल मी, इफ आई आस्क यू, गोवा इज ऑल्सो ऑन द कोस्ट लाइन, कैन वी हैव अ वूल और अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन गोवा? अरे मैं पूछ रहा हूँ कोस्ट लाइन, टूरिज्म हटा दो, टूरिज्म का इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। कैन वी हैव where it is better to have a factory for woolen clothes? In northern India or in southern India? Ludhiana is famous for that. सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स के लोग कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा, पंजाब से आ रहे हैं। मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स की फैक्ट्री है। इट इज़ अबाउट हाउ ट्रेडिशनली समथिंग हैज़ डेवलप्ड। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे टैनरीज जो हुई, लेदर टैनरीज जो हुई, वो कानपुर और आगरा में इस्टेब्लिश हुई, वहाँ हो गया। उसका रीज़न भी था, इधर से जो जानवर मिलता था वो ज़्यादा हेल्दी होता था, या उसका लेदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है जो नॉर्दर्न इंडिया में आपको मिल रहा है। रॉ मटेरियल का मतलब सिर्फ फ्यूल नहीं है, देयर आर मल्टीपल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सप्लाई ऑफ लेबर। हो तो सब कुछ सकता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आता है इस चीज में, आप डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, आता है। बंगाल सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज था। Let's say this is India. If I draw this line, 2/3 of the population is living above that line. Two-third of 60%, 2/3
of our population is living above that line. And that is where whole concentration you will see. इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हो ना, उसका सिर्फ एक नहीं, उसके बहुत सारे हिस्टोरिक फैक्टर्स भी हैं. कारीगर नहीं मिलेगा, कहाँ से लेके आओगे? बनारस का कारीगर बनारस में मिलेगा, चूड़ियों का कारीगर. हाँ, अरे सर, ग्लोबलाइजेशन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अलीगढ़ में तालों का काम होता है ना? दे आर फेमस फॉर एवरीथिंग विथ लॉक्स. देर आर सर्टेन थिंग्स कि आप कहीं पर भी लॉक इंडस्ट्री सेटअप कर लो, कहीं भी कर सकते हो आज के टाइम पे तो, लेकिन उस लॉक इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का जो एक्सपर्टीज़ है ना, वो वहीं मिलेगा. यही अच्छा ग्लोबलाइजेशन है. वाई देयर इज़ नो कोचिंग इन फरीदाबाद? हब बन जाता है ना, ग्रेजुअली एक चीज़ हब बनना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द सप्लाई. There's like some, you're coming from Dwarka, you're coming from Faridabad, I'm coming from Noida, and we are all we're coming from 3 different corners of this conglomeration. Why here only? Gradually this has developed as a hub. Gradually it has developed as a hub. यहाँ पर आपको सिर्फ कोचिंग नहीं मिलेगी, आपको जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो भी इजीली मिलेंगी यहाँ. दिल्ली में नहीं, यहाँ पे इधर झंडे वाला चले जाओगे या इधर पटेल नगर से थोड़ा सा आगे चले जाओगे, बोलोगे कि लक्ष्मीकांत ढूंढो, ढूंढने से नहीं मिलेगी. समझ में आ रहा है? इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द रॉ मटेरियल्स. इट इज़ नॉट जस्ट, ऑफ कोर्स एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर ना. टुडे ऑल्सो द बिग, दोज हु आर बिग टीम्स इन ऑनलाइन, दे हैव देयर ऑफिसेस हियर. लेकिन वहाँ अगर माइग्रेशन रोक दोगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल विल आ जाती है वहाँ पे, दैट दे विल नॉट ईजीली अलाउ द माइग्रेशन टू स्टॉप, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द कंट्रीज लेबर बैलेंस. लेबर सप्लाई वहाँ से बहुत ज़्यादा है. सारे भट्टे, मतलब आप ये सोचिए, रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है.